who was born in a family with a legal background, in fact aspired to be a doctor, but destiny had something else in store for him. Upon his father, Justice Saraf, being transferred to Bombay High Court, he joined the prestigious Government Law College, Mumbai, and then there was no looking back. He was a topper in all 3 years of the degree course and was also a recipient of various medals and prizes. He has a passion for teaching and has also taught in KC Law College, Mumbai, and also delivered lectures in Nalsar. As a lawyer, he specializes in constitutional law and has domain expertise in arbitration law and intellectual property laws. Dr. Saraf is a much sought after counsel on the original side of Bombay High Court, and no matter how complicated the matter gets, with his advocacy skills at his best, he is bound to succeed. And that too, at times winning the hearts of the court and also his opponents with his inimitable style and mesmerizing oratory skills. Dr. Saraf has also been honored with the PhD degree, where he submitted his thesis on the topic Judicial Intervention in Arbitration in India. Dr. Saraf was designated a senior counsel in the year 2020 and presently serves as the Advocate General for the state of Maharashtra. What makes a good lawyer? Good communication skills, perseverance, diligence, creativity, logical thinking, responsiveness, persuasion skills, to name amongst a few. The speaker for today's lecture, Dr. Birendra Saraf, lacks none of these qualities. Our today's lecture is on a very interesting topic, which is the juxtaposition of constitution and morality, which has been an evergreen topic of debate since decades. According to the father of our constitution, Dr. B.R. Ambedkar, constitutional morality is necessary for the peaceful working of a democratic constitution. However, it is not a natural sentiment. It has to be cultivated. Constitutional morality entails adherence to constitutional norms that enable the practice of the constitution not only in its letters but also in its spirit. Today, I say this on behalf of all the members of late Shri Vinod Bobre Senior Advocate Memorial High Court Bar Association Study Circle, that to hear on this particular topic from none other than the Advocate General of Maharashtra himself is nothing short of a prestige for all of us present today. I am conscious that all of you are eagerly awaiting to hear Dr. Saraf, and now I request Dr. Saraf to deliver his lecture on the subject Evolution and Application of the Constitutional Morality. Shri Atul Pandey, the President of the Bar Association, Mr. Amol Jaltare, the Secretary, Mr. Sudame, Mr. Deshpande, the Assistant Solicitor General, Mr. Deven Chauhan, the Government Pleader, and my fellow members of the Bar. It is really my absolute privilege and honor to be standing here to share a few thoughts with the members of this illustrious Bar. After having accepted the invitation of Mr. Pandey, when I actually received the invitation and realized that the study circle is in the memory of Mr. Vinod Bobre, I actually got a cold feet, because I now realize that I was speaking in a study circle of a person as illustrious and as learned as Mr. Vinod Bobre. And I really questioned whether I'll be able to live up to the memory of the great Vinod Bobre, because my memory of Mr. Vinod Bobre is that of watching him as a raw junior argue a matter in court, where he had hardly any papers in his hand, he just had a bare act in his hand. And the manner in which he analyzed this section by just reading from the bare text was an experience which I have never forgotten. And that always left me in an absolute state of admiration for Mr. Vinod Bobre. So I'm really happy that the Nagpur Bar runs the study circle in the name of Mr. Vinod Bobre. But at the same time, the warmth and the affection of the Nagpur Bar always makes things much easier. So I'm really not here today to deliver any lecture. What I'll endeavor to do is just share a few thoughts with you all. And I'm really thankful to Mr. Pandey for having given me this opportunity. The subject which I've been asked to speak on today is the evolution and the application of the principles of constitutional morality. Before we proceed to constitutional morality, what really is morality? Morality is generally a set of principles
and social standards, personal or social standards, for good or bad behavior or character. It is often said to be a quality of being right, of being honest and expectable. And various such values or morality principles are imbibed in us from our childhood. So, when a parent tells a child that you should not hit others, he is imbibing in that child the principle of compassion for coexistence. When the parent tells the child not to cheat in exams, he is imbibing in him a sense of morality to do what is right. So these are sense of personal moralities which are imbibed in people from childhood. And very often the concept of morality in a society also develops from various religious tenets and various religious scriptures. The concept of maybe pap and punya in Hinduism, or haram in Islam, or a sin and virtue in Christianity are nothing but concepts of religious morality which religion has taught its followers to follow. But in a country as vast and diverse as India, very often the idea of morality varies from section to section, from region to region, and also from religion to religion. What is found acceptable in one section of the society may be found abhorrent in another section of the society. So there is a great deal of difference in the sense of morality in different parts of India, in different sections of the society also. But largely, certain principles are common, which are common to most of the religions, which are common to most of the sections of the society: love, compassion, forgiveness, gratitude. These are generally common sense principles of morality. And it is also important for us to dwell upon the fact that a concept of social morality also changes with time, because certain concept of morality in a society are developed at times from wrong understanding of religious scriptures, or they have developed over a period of time by virtue of the fact that the majority of the society thought that is right. And we have had time and again social reformers coming in and setting right this sense of morality in a society. So when we had somebody like Mahatma Phule, Savitribai Phule, Ishwarchand Vidyasagar come and tell the society that these practices which we follow today are not correct, that we should discontinue these practices. That is an evolution of a concept of morality in a society where what was considered right and moral at a certain time in the past, at a later point of time, it is found to be not right. And that brings us to the point that a concept of social morality can change. It is a shifting morality. Then, after years of freedom struggle, we had the framers of the Constitution coming in to draft the Constitution of India. They were aware of the social realities in India. They were aware of our social structure. They were aware of various inequitable practices, discriminatory practices followed in different parts and different sections of society in India. And that is what they tried to undo by incorporating in the Constitution certain provisions. Now, when the framers of the Constitution
incorporated provisions for affirmative action to eradicate discrimination against the backward and marginalized sections of the society. They really were trying to undo certain discriminatory practices which were found to be a norm in certain sections of the society. It was framed. Till that time, the Constitution will never achieve the purpose for which it was framed. And I ask myself a question, and I invite all of you to introspect, that is the furtherance of constitutional morality, or rather the constitutional principles in the constitutional spirit, is that only the responsibility of the state, or is it the equal responsibility of the citizens in their day-to-day life to imbibe in their conduct a sense which will, or an action which will further the constitutional principles? And that is something which we all need to be aware of. And Baba Saheb Ambedkar said that till the citizens are saturated with constitutional morality, I need to provide detailed provisions. It's been decades since the Constitution was framed. Has the citizenry of India still become saturated with constitutional morality? And leave aside saturated, are we endeavoring to imbibe in ourselves the principles of constitutional morality? And I beseech you all as lawyers, because as lawyers, we have the power to influence society, and therefore it is our responsibility that by our conduct, our day-to-day actions, and the manner in which we conduct our practice, we further the constitutional principles, not just in their bare text, but in the spirit of it. And it is only if each one of us as citizens do that, that the dream and vision of the founding fathers of the Constitution, the framers of the Constitution, of an Indian society, an egalitarian Indian society, where everybody lives with a sense of fraternity, where the liberty of others is not trampled upon, where everybody has equal rights, can be achieved. So with these notes, I once again thank you all for inviting me for today's lecture. Thank you very much. That one lawyer with a briefcase can steal more than 100 men with guns. And our keynote speaker for today, Dr. Saraf, has definitely stolen a huge round of applause for delivering a lecture which has enlightened all of us. May I now request Advocate Shri Atul Pandey, President, High Court Bar Association, Nagpur, to felicitate Honorable Dr. Birendra Saraf by offering him a shawl, Shrifal and memento as a token of our love and sincere appreciation. दर्शकों नमस्कार। इस समय में एएचएन न्यूज की टीम बॉम्बे हाईकोर्ट नागपुर बेंच के उस ऑडिटोरियम में है जहां पे हाल ही में राज्य के महाधिवक्ता डॉक्टर बीरेंद्र जी सराफ, इनका एक काफ़ी अच्छा स्पीच यहां पे हुआ है। आप देख सकते कि ये तमाम पूरे स्टडी सर्कल के ये सभी विद्यार्थी अधिवक्ताएं लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे। मैं आपको बता दूं कि स्वर्गीय श्री विनोद बोबड़े सीनियर एडवोकेट मेमोरियल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन स्टडी सर्कल की ओर से नीति, सदाचार, नैतिकता, पुण्यशीलता, नीतिमत्ता आदि के ऊपर में महाराष्ट्र राज्य के महाधिवक्ता डॉक्टर बीरेंद्र सराफ, इनका लेक्चर हाईकोर्ट यानी इसी ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ है। और आज के उनके इस लेक्चर से लोगों को काफ़ी फायदा भी होने वाला है। संविधान के जिस प्रकार से जो 4 प्रिंसिपल जो बताए गए हैं, जिसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये तमाम बातों के ऊपर में गौर फरमाया है, रोशनी डाली है। आइए
यहाँ पे स्टडी सर्कल के कुछ छात्र छात्राएं हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। मैम ये बताइए, आपने सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत शानदार तरीके से आपने इस कार्यक्रम का संचालन किया है। जब मैंने देखा कि जब सर का जब लेक्चर शुरू था, आप गौर से पूरा सुन रही थी, कौन से पॉइंट्स आपको अच्छे लगे, क्या कहना चाहोगी? सबसे पहले ऐसा था कि ऐसा हमारे था कि हम कॉलेज के क्लास में बैठे हैं, जो हमें फिर से कोई कॉन्स्टिट्यूशन वापस पढ़ा रहा है। तो जितने उन्होंने केस लॉज रेफ़र किए, ये सब केस लॉज है जो हम बारी बार जब हमारा खुद का कोई केस होता है हाई कोर्ट में, वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत एक अच्छा मौका था फिर से वो 1950s से लेके अभी तक के सारे जजमेंट सुनने का, कि उन और स्पेशली डॉक्टर सराफ का भी जो व्यू था ऑन कॉन्स्टिट्यूशन एंड मॉरलिटी, जो आज का टॉपिक था, कि उनका क्या व्यू है, एंड स्पेशली व्हेन ही इज़ द सीनियर मोस्ट गवर्नमेंट लॉयर, तो उनका ओपिनियन क्या था, उस साइड से कैसा उन्हें फील होता है, उनका क्या ओपिनियंस है, वो सुनने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर था। एंड आई एम ग्लैड कि मैं ये सुन पाई लेक्चर। बिल्कुल बिल्कुल। योर गुड नेम प्लीज? आयुषी। तो आप थे आयुषी जैसे ऐसे कई ऐसे छात्र छात्राएं थे जिन्होंने गौर से इस लेक्चर को सुना है, क्योंकि भविष्य में इनके काफ़ी कामकाज आने वाला है, ना कि इनके कामकाज बल्कि उन तमाम लोगों के कामकाज आने वाला है। इस समय हमारे साथ में एडवोकेट बोबड़े जी भी है, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर ये बताइए कि संविधान का आदर क्यों करना चाहिए? संविधान का आदर इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर ही हमारा देश चलता है जी। और इतना बड़ा और सेक्युलर जो देश है हमारा, उसके अंदर अगर कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज अडहेयर नहीं करे जाए तो एनार्की चलेगी। और जैसे इस लेक्चर में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक और तरीका दिखाता है। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ वकालत और लॉ ही नहीं है, पर वो जीने का एक अलग तरीका भी सिखाता है ज़िंदगी में, और उसके कारण ही वो संविधान का आदर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, संविधान का आदर करना चाहिए, ऐसे एडवोकेट बोबड़े जी इनका कहना था। मैम कैसा लग रहा है ये लेक्चर सुनने के बाद? स्टडी सर्कल की ओर से ये जो उपक्रम लिया गया है, जिसके HBCA के फिर आपके प्रेसिडेंट अतुल पांडे सर हो या फिर सेक्रेटरी अमोल जलतारे जी हो, इनका ये जो उपक्रम है इसके बारे में बताइए, कैसा लग रहा है स्टडी सर्कल की ओर से? बहुत ही अच्छा लग रहा है, और हर वेडनेसडे कुछ ना कुछ स्टडी सर्कल की ओर से काफ़ी गेस्ट आते हैं और कुछ ना कुछ अच्छे ही लेक्चर देते हैं, जिनके बारे में हमारा नॉलेज और इंक्रीज़ होता है डे बाय डे। हम बहुत सी चीज़ें गेन करते हैं, जैसे आज का ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन इन मॉरलिटी, इस पे सर ने बहुत अच्छा, और एक केशवानंद भारती केस और वेरी इंपॉर्टेंट केसेस आज उन्होंने डिस्कस की हमारे साथ, तो वो सुन के बहुत ही अच्छा लगा और बहुत गेनफुल था। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहते हो कुछ? नहीं, बिल्कुल। सराफ सर ने जब उनका जब लेक्चर जब शुरू था, कई रेफरेंसेस उन्होंने उस ज़माने के दिए जो आज के युवाओं के लिए काफ़ी प्रेरणादायी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैम क्या कहना चाहती है इस प्रोग्राम को लेकर आप? हम बहुत भाग्यशाली है सर, जो हम यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं ये लेक्चर्स। थैंक यू फॉर HCBA, क्योंकि सब लोगों को इनवाइट करते हैं, एडवोकेट्स को, जो जूनियर्स है, सीनियर्स है, सब लोग, हम भी बहुत कुछ सीखते हैं हर थर्सडे को। और आज जो सब्जेक्ट था कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का, ये जो है आम जनता, उनको भी अवेयर रहना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। वो अवेयर रहेंगे, हम भी अवेयर रहेंगे, और सारी जनता अवेयर रहना चाहिए, यही कहना चाहूँगी मैं। बिल्कुल बिल्कुल। संविधान, इन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी, और बात ये भी क्या है कि संविधान के प्रति हर किसी ने सजग रहना जरूरी है। संविधान होने से नहीं बल्कि उसके ऊपर में अमल होना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। क्या कहना चाहोगी रिया जी आप? जो डॉक्टर सराफ ने आज अपने लेक्चर में बताया, लाइक शायरा बानो का केस एंड ऑल्सो नवजोत का केस, जब उन्होंने बात करी कि जो 15 इयर्स के नीचे के जो लोग हैं, उनका अगर मैरिज के पहले उनका अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स के वक्त उसको रेप कंसिडर किया जाता था, बट रिलीजन जैसे बीच में आया, सो इट वाज वेरी यूज़फुल। और बीइंग अ स्टूडेंट, अभी इनका लेक्चर सुनना वाज वेरी प्रिविलेज फॉर मी। बिल्कुल बिल्कुल। पटेल मैडम भी है, उनसे भी जानना चाहेंगे, क्या करना चाहोगे पटेल मैम? मैं बहुत खुश हूँ, मेरे को ये मौका मिला है आज ये लेक्चर अटेंड करने का। बीरेंद्र सराफ सर ने अलग अलग जजमेंट्स, SB गुप्ता, केशवानंदी, फिर नवजोत केस के बारे में बताया, और उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी का क्या व्यू था। फिर अलग अलग बड़े बड़े जजेस थे, उनका व्यू बताया, जैसे कि DY चंद्रचूड़ सर, उनका भी बताया कि उनका कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी पे क्या व्यू था। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। स्टडी सर्कल को लेके क्या कहना चाहोगे आप?
स्टडी सर्कल तो मतलब मैं पहली बार अटेंड करी हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगा ये, मतलब आगे भी मैं अटेंड करना चाहूँगी। AHN न्यूज़ ये पूरी खबर समस्त अधिवक्ताओं को बता रही, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों, आज हमने स्टडी सर्कल के उन तमाम अधिवक्ताएं जो छात्र छात्राएं हैं उनसे जब बात किया तो उन्होंने डॉक्टर बीरेंद्र सराफ सर की काफ़ी सराहना की है, क्योंकि बहुत ही अच्छी जानकारी उन्होंने दिया है, जिसके चलते भविष्य में ये जो अधिवक्ताएं हमारे साथ में जो जुड़ चुके हैं भविष्य में इन्हें काफ़ी फायदा होने वाला है। लेकिन बातों बातों में उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के उस संविधान के बारे में कुछ रेफरेंस भी दिए। उस समय के जो जजेस थे किस प्रकार से कामकाज चल रहा था, रिलीजन कैसे आड़ा आ रहा था, जात पात से ऊपर है ये संविधान। लेकिन अफसोस कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय भी कहा था कि संविधान तो बनाया जरूर गया है, लेकिन संविधान के ऊपर में इंप्लीमेंट करने वाले वो 5 लोग चाहिए। क्या सही मायने में इस देश को वे 5 लोग मिले हैं जो संविधान को पूरा लेके चले? अगर नहीं मिले हैं तो इसके ऊपर में तमाम अधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी, इन लोगों ने ध्यान देने की जरूरत है। यदि इसके ऊपर में सही तरीके से यदि अमल होता है तो यकीनन हमारा संविधान ये मात्र भारत में नहीं तो पूरे विश्व में राज कर रहा है, जिसका झंडा लहरा रहा है। ऐसा कहूँ तो बड़ी बात नहीं हो सकती। नागपुर के बॉम्बे हाईकोर्ट के सभागृह से वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ संजय मिरे, AHN न्यूज़ नागपुर। अरे वाह, पिकनिक की तैयारी? अब बेटा हम ठहरे डायबिटीज के पेशेंट, इस उम्र में पिकनिक वगैरह तो ना हो पाएगा, ज्यादा बैठने से पैरों में सूजन भी। तो फिर इतनी सारी दवाई क्यों? 90% ऑफ डायबिटिक पेशेंट की शुगर सिर्फ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से कंट्रोल की जा सकती है। अच्छा, अब क्या करें? पूरे इंडिया में अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के 50+ सेंटर्स है, तो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और डायबिटीज का सोल्यूशन पाएं। आज ही अपने कंफर्मेटरी टेस्ट कराएं सिर्फ एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से।